नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल मज़ेदार रीडिंग में। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 वाटर की रीडिंग। दोस्तों, मैं हर वीडियो में जैसे आपको बताता हूं, तो इस वीडियो में भी जान लीजिए कि मैं आपको ये चैप्टर समझाता नहीं हूं या फिर इस चैप्टर के नोट्स नहीं प्रोवाइड कराता हूं। मैं केवल क्या करता हूं, आप लोगों के लिए रीडिंग करता हूं। तो आप लोगों को कभी कभी लगता होगा भाई इसमें क्या है, रीडिंग तो हम खुद से भी कर सकते हैं। वही भाई देखो, मैं बताता हूँ, रीडिंग खुद से करने में ना सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना, बुक देख के ना, जिन लोगों को रीडिंग करने की आदत है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं आदत है ना, उनको लगता है ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब उनको ना अंदर से खुजली होती है रीडिंग करने में। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं रीडिंग कर देता हूँ। तो उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, बस बस लेट के या बैठ के कहीं पे सुन लेना है, आराम से सुन लेंगे। और मोबाइल में देखेंगे ही सुनते हुए, तो मोबाइल में देखेंगे तो उनको एनसीईआरटी दिख ही जाएगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का ही रिकॉर्डिंग मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल देखना है मेरा वीडियोस और बस आपका एनसीईआरटी प्रिपेयर होता जाएगा। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो और आप क्लास 7th में हो। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? ग्लॉसरी में क्या दिया है देखते हैं। टेरेरियम, टेरेरियम, it is an artificial enclosure for keeping a small house plants. The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land is known as the water cycle. फिगर 5.1 यही वाला फिगर है जो आपको दिख रहा है, ये वाला। Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water is used to irrigate a field in Haryana may have flown down the Amazon River 100 years ago. The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. ये है, यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है भाई साहब कि मेक योर ओन टेरेरियम। तो टेरेरियम फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार, ये एक्टिविटी है भाई साहब, ये पढ़ लेना खुद ही से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये बनाने का प्रोसीजर दे रखा है। पढ़ ही देता हूँ यार, तुम लोग फिर बोलोगे कि क्या पढ़ते हो। Fill 1/4 of a big jar with soil and press it well. Put a thin layer of humus on top of it. Plant the largest plants first and then arrange the smaller ones around them. Spray the arrangement with water and close the jar. The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drops of water. चलो ये हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ल्ड मेजर सीज लेक्स एंड रिवर, ये दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या क्या मेजर सीज एंड, जैसे मेजर सीज लेक्स एंड रिवर्स है, ये गंगा रिवर है, कैस्पियन सी है। और ये बात ध्यान रखना दोस्तों, कैस्पियन सी जो है ना, ये एक लेक है, जानते हो, सॉल्ट वाटर लेक है, ये कोई सी नहीं है, बस इसका नाम रख दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है ना। ये सॉल्ट वाटर लेक है कैस्पियन सी, याद रखना। फिर लेक विक्टोरिया है अफ्रीका में। फिर इधर देखो, लेक हुरोन है, सुपीरियर है, विनिपेग है, अमेज़न नदी है जो कि बहुत ही फेमस है, सबसे लार्जेस्ट नदी है अमेज़न। Distribution of water bodies. We all know that 3/4 of the Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? Is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage. Oceans
97.3%, ice caps 2.0%, groundwater 0.68%, freshwater lakes 0.009%, inland seas and salt lakes 0.009%, atmosphere 0.0019%, rivers 0.001% and total is 100%. Saline water कितना है 97.3%, बचा कितना 2.7% जो कि है फ्रेश वाटर, टोटल मिला के सब कुछ. Do you know salinity is the amount of salt in grams present in 1,000 grams of water. The average salinity of the oceans is 35 parts per thousand. Dead Sea in Israel has salinity of 340 grams per liter of water. Swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense. Water distribution can be demonstrated by a simple activity. See activity box. यहाँ दे रखा है. Take 2 liters of water. Let it represent the total water on the surface of the earth. Measure out 12 spoons of water from this vessel into another bowl. The water that is left behind in the vessel represents the salty water found in oceans and seas. This water is obviously not fit for consuming. It is saline, contains salts. The 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth. The figure shows us the distribution of this fresh water. See for yourself how much water can actually be used by you. 1 drop equal to rivers, half spoon is equals to freshwater lakes, 2 spoons groundwater and 9 spoons ice caps. ये है. Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? ओश यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है वाटर के मतलब स्कैर्सिटी को दर्शाने के लिए. Ocean circulation. There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides, and currents. Do you know March 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways? यह है Pacific Ocean. Waves. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. Waves are, do you know? Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the winds, the stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. Waves. During a storm, the winds blowing at a very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal wave is called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. The largest tsunami ever measured was 150-meter high. These waves travel at a speed of more than 700 kilometers per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami. Do you know tsunami is a Japanese word that means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. Tsunami, the Earth's pandemonium. Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was
9.0 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastlines of the land masses in the South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at a speed of about 800 kilometers per hour, comparable to speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the islands in the Indian Ocean. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands that marked the southernmost point of India got completely submerged. As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands from earthquake From Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 kilometers per hour to less than 70 kilometers per hour. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 kilometers from the coast, killing more than 10,000 people and affecting more than lakh of houses. In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, and the Andaman and Nicobar Islands. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean, but not in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. Destruction caused by the tsunami on Tamil Nadu coast. ये देखिए ये दोनों पिक्चर दे रखे हैं. The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coasts in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems, and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by destructive wave. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave tsunami struck. Tides. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon, and the earth are in the same line and the tides are the highest. These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. ये देखो neap tide, ये है spring tide. High tides help in navigation. They raise the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. Ocean currents. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cold, figure 4.6. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. The cold currents carry water from
polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean Current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. The ocean current influence the temperature conditions of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. Seas around Japan and the eastern coast of North America are such examples. The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. तो देख सकते हैं, ये देखो हमबोल्ट करंट है, हम इसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं. ये देखो ब्राज़ीलियन करंट, ये फॉकलैंड करंट, ये बेंगुएला करंट, अगुलहास करंट, फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर कैनरीज, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. ये है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है, इधर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन लिखे नहीं है लेकिन होगा. ये क्रोशियो है, ओयोशियो है. ये आप लोग देख सकते हैं ओशन करंट्स है. वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है इधर, और इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये वाला. ये लैब्राडोर करंट है, अलास्का करंट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, कैलिफोर्नियन करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वगैरह वगैरह. अच्छा, fill 3/4 of a bucket with tap water. Heat the water by putting an immersion rod on one side of the bucket. On the other side, introduce an ice tray just removed from the freezer. Add a drop of red ink to observe the path of current by the process of convection. तो ये आप लोग एक्टिविटी चाहे तो करके देख सकते हैं. जो लोग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं वो लोग ना देखें ये सब करके, उनके कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं है. जो लोग 7th में पढ़ते हैं वो लोग देखें. इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग लास्ट तक बने रहें, और लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको ही फ़ायदा होगा. कि क्या होगा ना कि आपके दिमाग पे एनसीईआरटी अब छपने लगेगी. आप 2-3 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, जितने बार मन करता है उतने बार वीडियोस देखिए. और ऐसा नहीं कि एक वीडियो को आज ही देख लेना है. जैसे मान लो आज तुमने पहली बार देखा तो दूसरी बार कब देखोगे? दूसरी बार 2-3 दिन बाद देखो, तीसरी बार और 2-3 दिन बाद देखो, फिर चौथी बार और 2-3 दिन बाद देखो. ऐसे करते करते तुम मतलब 1 महीने में कम से कम 3-3 दिन बाद देखो तो 1 महीने में 10 बार हो जाएंगे. तुम इसी प्रकार से हर चैप्टर का देखते रहोगे ना. और ये कितने मिनट लगेंगे भाई साहब? ये कितने मिनट लगेंगे? हार्डली 15-20 मिनट का वीडियो रहता है, तो तुम आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मेरे बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ रहेंगे. इसी प्रकार से एनसीईआरटी की रीडिंग पढ़ते रहिए और मज़े लेते रहिए और समझते रहिए. चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आपको अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे मेरा मनोबल बढ़ता है. थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.